जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने लगे और कोशिश करेंगे कि इसको एक छोटा-सा चैप्टर है, तो इसको हम एक ही लेक्चर के अंदर कवर कर दें, ठीक है? तो अगेन कि मुझे उम्मीद है कि ये फ़ैन की वज़ह से कोई इश्यू नहीं होगा, आवाज़ क्लियर रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको, इन्फॉर्मेशन एंड डेटाबेस को। डेटाबेस बेसिकली क्या होता है पहले हमें इसका पता होना चाहिए मतलब हमारा जो भी डाटा होता है जिसमें फॉर एग्जांपल हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं या हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट में हमारा रोल नंबर हमारी एज हमारी डेट ऑफ बर्थ और हमारा नाम वगैरह ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारा हमारा डाटा है ठीक है और जब हम इसको एक अच्छी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर देंगे और ये सारा डाटा जो हमारे पास फाइल्स की सूरत में मौजूद था जब हम उसको अपनी स्क्रीन की तरफ ले जाएंगे सारा डाटा जो है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमारी कंप्यूटिंग मशीन कंप्यूटर में आ जाएगा उसको हम कहेंगे डेटाबेस A database is an organized collection of data stored and accessed electronically. अब इसके अंदर इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों ने डेटाबेस के बारे में ही हर चीज पढ़नी है कि डेटाबेस क्या होता है उसके डिसएडवांटेजेस उसके एडवांटेजेस उसका यूसेज और उसकी टाइप्स क्या होती हैं उसकी मैनेजमेंट किस तरीके से की जाती है ठीक है ये सारा इसका एक छोटा सा ओवरव्यू था और अब हम इसको देखेंगे एंड इफेक्टिव डेटाबेस विल तो इसकी इफेक्टिवनेस देख लेते हैं अडेप्ट चेंजेस अवॉइड रिडंडेंसी प्रोवाइड्स एफिशिएंट एक्सेस टू डाटा clean, consistent, and easy to understand. Have clearly defined universal rules for addition, modification, and deletion of data. Represent all expected data over time. Supports the maintenance of data integrity over time. उसके बाद हमारे पास इसके कंट्रोल्स आ जाते हैं डेटाबेस कंट्रोल्स establish and implement data backup and recovery procedures establish various levels of access controls, establish controls to ensure only authorized persons can update the database. Establish controls to handle concurrent access problems. Establish controls to ensure accuracy, completeness, and consistency of data elements. Use database checkpoints to restart processing after a system failure. Use database performance monitoring tools, establish definition, standards, and closing closely monitor for compliance. ये जो पॉइंट्स है इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली जो क्वेश्चन होता है जो पेपर में आता है वो 4 to 5 मार्क्स का होता है यानी अगर कहीं भी इस तरीके से 7-8 पॉइंट लिखे हैं तो उसमें से जो भी आपको इजी लगता है कोई से 5 पॉइंट याद कर लें बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है हाँ जो इजी लगते हैं जो समझ आते हैं उस तरीके से कोई ना कोई 5 पॉइंट याद कर लें एक आधा ऊपर याद कर लें वरना जब याद ही कर लिया तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग भूलेंगे लेकिन फिर भी कोई से 5 पॉइंट याद कर लें इससे ज्यादा नहीं आता पेपर में एक 1 मार्क्स का आप लगा लें 1 पॉइंट तो मैक्सिमम 5 मार्क्स का आएगा तो उसके लिए कोई से 5 पॉइंट याद कर ले जो भी इजी लग रहे हैं उसके बाद एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं फास्ट एंड इजी डेटा शेयरिंग प्रोवाइड्स रिलायबल डेटा better decision making increased end user productivity faster data access data consistency enhanced data security greater data integrity and independence इसके अलावा इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं high startup cost damage to database affect all applications complex and difficult to design database administrator and user requires training requires continuous maintenance अगेन अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर फिर भी कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं जो कि कॉमन चलती आ रही है उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS और एज यूजुअल जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों ने इस चीज को DBMS के थ्रू नहीं याद करना इसको पूरा इसके एप्लीकेशन के साथ याद करना है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज नॉट DBMS ठीक है तो DBMS बेसिकली क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर टूल डिजाइन टू डिफाइन एंड मैनेज डाटा इन अ डेटाबेस ठीक है ये सॉफ्टवेयर का ऐसे सॉफ्टवेयर टूल होता है जो कि हम लोग क्या करते हैं हम लोग इससे अपने डाटा को मैनेज करते हैं ठीक है कौन सी चीज कहाँ पे किस तरीके से होनी चाहिए हम लोगों ने ये देखना होता है इट aids in organizing controlling and using the data need for application programs
Database management system can control user access at the following levels. User and the database, program and the database, trajectory and the database, program and data field, user and transaction. यूजर एंड डाटा फीड। उसके बाद ये इसकी कुछ हमारे पास एडवांटेजेस आ जाते हैं। इम्प्रूव्स डाटा शेयरिंग, प्रोवाइड्स रिलायबल डाटा, better decision making, increase end user productivity, faster data access, reduce data redundancy, maximizes data consistency, improve data security, greater data integrity and independence, reduce data management cost। अब इसके बाद हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास एक मेटा डाटा होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मेटा डाटा क्या होता है? मेटा डाटा एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारा नाम और कुछ डेट क्रिएट की जाती है, मॉडिफाई होता है, फाइल का साइज होता है, जो चीजें मतलब आप प्रॉपर्टीज को जब चेक करते हैं ना, अगर आपके पास कोई फोल्डर होगा कंप्यूटर में, जब आप उसको चेक करेंगे उसके ऊपर उसका नाम आएगा, वो किस दिन मॉडिफाई हुआ था, वो डेट आएगी, ठीक है। उसके अलावा वो कितनी वो फाइल में उसकी उसे कितनी स्पेस कवर की हुई है, उसका साइज क्या है, ये चीजें शो होंगी आपको, ये बेसिक चीज होती है, तो इसको हम कहते हैं मेटा डाटा। Metadata is the data that provides information about other data, author's name, date created, date modified, file size, etc. उसके बाद हमारे पास आगे इस मेटा डाटा की भी कुछ टाइप्स आ जाती है, जिसमें स्ट्रक्चर, टेक्निकल, डिस्क्रिप्टिव, प्रेजर्वेशन और राइट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर मेटा डाटा क्या होता है? डाटा अबाउट वेयर एंड हाउ एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड इन अ सीक्वेंस और हायरार्की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम लोग दे देते हैं, हम लोगों ने पहले एक फोल्डर तक पहुंचते हैं, उस फोल्डर तक पहुंचने के लिए वो हम लोग क्या करेंगे कि हमारी कोई फाइल है, जिस तरह ये जो फाइल मैंने ओपन की है, इसके लिए पहले मुझे देश पीसी की एक एप्लीकेशन थी, मैंने उसको ओपन किया, उसके बाद वहां पे मैं डाउनलोड्स वाले ऑप्शन पर जाती हूँ और वहां से मैं ये फाइल है, तो ये जो जिस जिस सीक्वेंस से मैं चली आ रही हूँ, जो ये हायरार्की बनी थी कि पहले मैंने एक एप्लीकेशन को ओपन किया, उसमें से बाद में मैंने एक फोल्डर ओपन किया, फिर उसमें से मुझे फाइल मिली, तो ये बेसिकली उसकी उस इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन थी, और इसको हम लोगों ने स्ट्रक्चरल बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल मेटा डाटा। उसके बाद टेक्निकल देखते हैं। डेटा अबाउट द साइज, फॉर्म एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक इसके अंदर बात आ जाएगी कि ये मेरे पास पीडीएफ की फॉर्म में है, ठीक है, ये आगे, और उसके बाद इसका साइज कितना है, वो वाली बात आ जाएगी इसके अंदर। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव मेटाडाटा, डेटा अबाउट एलिमेंट्स सच एज टाइटल, ऑथर एंड सब्जेक्ट। अब ये किस सब्जेक्ट के बारे में है और इसका टाइटल क्या है, ठीक है। ये कुछ कंसाइज नोट्स है उसके, ये इसका नेम है, ठीक है, ये इसका टाइटल दिया हुआ है, फिर ये किस ऑथर की और इसका सब्जेक्ट वगैरह ये सब डिस्क्रिप्टिव में आ गया। उसके बाद ये preservation data, that are used to assure that a file that has not been corrupted or lost। और ये वाला डाटा किस लिए यूज होता है कि ये फाइल बिल्कुल सही हालत में, ये भी कभी करप्टेड या लॉस नहीं है। उसके बाद ये राइट्स आ जाते हैं। डाटा अबाउट एन ऑब्जेक्ट्स कॉपीराइट स्टेटस, फोल्डर एंड एनी रेलेवेंट लाइसेंस, इसमें कॉपीराइट की बात आती है। उसके बाद ये डायरेक्टरी सिस्टम इन database management system। A directory system can provide centralized control over data resources and data management. Data dictionary. It contains metadata, names, definitions, attributes of data elements. ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके कुछ एडवांटेजेस आ जाते हैं यहाँ पे। Improved data quality and data integrity, improved documentation and control, reduced data redundancy, consistency in data use, easier data analysis, improved decision making based on better data, simpler programming, enforcement of standards। ये जो बेसिकली लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, इसमें आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस ही कर रही चीजों को, तो ये मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं कर रही मैं। एक तो ये कि मैं इसको सिर्फ रिवीजन के तौर पे कर रही हूँ, मैं इसको थॉरली मैं नहीं स्टडी करवा रही कि मैं एक टॉपिक लूँ और उसके ऊपर मैं 1 घंटे का टाइम दूँ और उसके बाद हम अगले की तरफ मूव करें। ऐसा नहीं करूंगी मैं, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया पेपर में, जस्ट 2 to 3 days, तो उस हिसाब से इसको किया है कि ताकि ये सिर्फ इस पर्पज के लिए कि जो लोग रिवीन करते हैं और वो रिवीन करते हुए भी मसला होता है, मतलब मुझे पर्सनली तौर पर बहुत गुस्सा आता है रिवीन करते हुए
कि मैं चाह रही होती हूँ कि कोई पर्सन हो जिसके साथ थोड़ा बहुत हो जाए कि ठीक है हम ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप स्टडी में जब हम लोग जाते हैं ना तो उसमें बहुत मसला आता है कि हम लोग आपस में किसी और तरीके में बात करने लग जाते हैं या इधर उधर की चल जाती है बातें, तो वो तरीका सही नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए और इसके अलावा कि रिवीजन करते हुए बंदे को ये भी मसला होता है कि अब मुझे ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्या ही हो जो कोई और सुने। तो ये इन चीजों को ओवरकम करने के लिए ये लेक्चर्स बनाए गए हैं ताकि जिन लोगों को ग्रुप स्टडी करनी है उनके लिए भी आसानी रहे, और जो लोग सुनकर याद करने के आती है उनको एक दफा ये सब सुना दिया जाए। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने, जो बंदा ये सोच रहा है कि इसको मैं थॉरली रीड करवाऊंगी, पढ़ाऊंगी, बताऊंगी कि क्या चीज क्या होती है, तो अभी उस चीज का टाइम नहीं है कि आप लोगों को ये बताया जाए कि ये सारा कुछ क्या होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और ये बात वैसे मैं एक पोस्ट भी मेंशन कर दूंगी ताकि जो लोग भी ये सोच के लेक्चर्स ले रहे हैं कि यहाँ पे आपको डिटेल में चीजें मिलेंगी, तो ये डिटेल लेक्चर्स का टाइम नहीं है। डेटाबेस स्कीमा पर आ जाते हैं। स्कीमा बेसिकली क्या होता है, वो एक ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है हमारे पास, जिस तरह यहाँ आपको एक पिक्चर दिखाई गई है उस तरीके से। database schema is the logical representation of database in a skeletal structure which shows how the data is stored logically in the entire database। इसके अंदर आप उस चीज की भी एग्जांपल ले सकते हैं जो माइंड मैप्स वगैरह हम क्रिएट करते हैं। उसके अलावा जी इसमें फिजिकल व्यू आ जाता है और लॉजिकल व्यू आ जाता है। फिजिकल व्यू, हाउ मशीन रीड्स अ database in form of bytes। Logically, how user does receive a database in the form of tables। ठीक है, उसके बाद हम इसमें टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स में हमारे पास इंटरनल स्कीमा, एक्सटर्नल स्कीमा और कंसेप्चुअल स्कीमा आ जाता है। इंटरनल में डिफाइन the physical storage structure of the database. It is a very low level representation of the entire database. External schema describes the part of the database which a specific user is interested in. It hides the unrelated details of the database from the user. Conceptual, a high-level representation of database that helps to organize and understand the information stored in that database. Database models. Database model defines the logical design and structure of a database and defines how data will be stored, accessed, and updated in a database management system. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसकी थ्री टाइप्स दी गई है, hierarchical, network और relational। Hierarchical database model, the oldest of the three forms of database models. Data is organized into tree-like structure with the lower level records subordinate to higher level records. Each record is having one parent record and many children records. The parent record at the top of the database is called the root record. If there are multiple nodes appear at the top, then, then these can be called as root segments. If a parent is deleted, the child has also deleted automatically. उसके बाद जी इसके कुछ एडवांटेजेस दिए गए हैं। इजीली ऐड एंड डिलीट इंफॉर्मेशन, एफिशिएंट विद वन टू मैनी रिलेशनशिप, fast and efficient data retrieval, efficient storage of data, very fast to access data at the top, conceptually simple due to the parent-child relationship, high database security and integrity। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। An advanced version of hierarchical database model allows multiple records to be linked to the same owner file. In this model, a child record is called a favorite and the parent record is called the owner. Supports many-to-many relationships. A child can have many parents. Many children have one parent. After that, you can see the diagram there. Further, we have to discuss the advantages. Handles many relationship types, easy and flexible access to data, promotes database integrity, data independence, conformance to standards. The next type is the relational database model. Relational database is a way of structuring data in tables, rows, and columns.
Each table contains one or more data categories in columns or attributes. Each row, also called a record or tuple, contains a unique instance of data for the categories defined by the columns. Each table has a unique primary key that identifies the information in a table. For example, the Oracle, IBM, and SQL Server. यहाँ पे आप लोगों को एक टेबल की एग्जांपल दी गई है और इसके अलावा भी हम इसको फर्दर की कुछ टर्मिनोलॉजी से उनको डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास टेबल, ट्रपल, एट्रीब्यूट, कार्डिनैलिटी और डिग्री, डोमेन, एटॉमिक वैल्यू ये सब आ जाते हैं. A table has rows and columns where rows represents records and column represents the attributes. Tuple, tuple a single row or record of a table. Then attribute, properties or characteristics which describe an entity. Cardinality, total number of rows represents in a table. For example, you can see this is the rows, these are the columns. After that, 1, 2, 3, 4, and 5. There are 5 rows there. So you can write the cardinality that 5. The cardinality is the total number of rows present in the table. Degree, the total number of columns, the attributes. For example, 1, 2, 3, 4, and 5. So there are 5 columns there. The degree, then the domain, a set of acceptable values that a column is allowed to contain. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने कभी कोई फॉर्म फिल किया होगा तो उसके अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू आएगी या यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आएगी तो ये उस तरीके से कुछ सेट ऑफ एक्सेप्टेबल वैल्यूज की बात कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद जी एटॉमिक वैल्यू, स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट इन अ डेटाबेस दैट नॉट बी डिवाइडेड. इसके अलावा हमारे पास कुछ इसकी कीज आ जाती है. A key is an attribute or a set of attributes that helps to identify a record or row of data in a table. इसमें further हमारे पास कुछ टाइप है जिसमें कैंडिडेट, प्राइमरी, सुपर, यूनिक, कंपोजिट, alternate and foreign key आ जाते हैं. Candidate key is a set of columns that uniquely identify rows in the table. Primary key, which one that's selected from candidate keys and uniquely identifies each record in the table. Super key, a super key of primary keys which helps to identify rows in a table uniquely. Unique key, all values will have to be unique in this key. Composite key, if any single attribute of a table is not capable of being the primary key, then we combining two or more candidate keys to form a key. Alternate secondary key, all candidate keys which do not become the primary key. Foreign key, an attribute in a table that acts as the primary key in other table. It is used to establish relationships between two tables. उसके बाद हम कुछ attributes देख लेंगे. Attributes are the properties or characteristics which describe an entity. The attributes of a student are name, roll number, class section, age, etc. There are some common types of attributes. For example, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है symbol or atomic, composite, single valued, multi-valued, derived, and key. Simple or atomic attributes which can't be divided further. For example, student's roll number. Composite attributes which are composed by simple attributes. Person's address, which consists of house, street, city, zip code, etc. Single valued attributes having a single value for a particular item, gender. Multi-valued attributes having a set of values for a particular item. Phone number, a person may have multiple phone numbers. Derived attributes which can be derived from one attribute और इसको आप यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है age derived from date of birth. Key attributes which are used to uniquely identify the record in a table, for example ID card number.
इसके बाद इसके हमारे पास कुछ एडवांटेजेस दिए हुए हैं। Operations can be applied easily, data accuracy, reduced redundancy, ease of backup and disaster recovery, structural independence, easier database design, implementation, management and use, ad hoc query capability, powerful database management system. इसी के साथ हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक शुरू होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का। तब ये भी जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है, इसको आप इसमें से जो जैसा जिस तरीके से मैंने बताया कि आप लोग कोई से भी इस तरीके की चीजें होती हैं, टाइप्स के नेम याद रखिए। आप लोग बेसिक होते हैं कि आपको पता हो कि टाइप्स के नेम्स क्या है, टाइप्स बेसिकली क्या है। इस चीज को आप लोगों ने थोड़ा सा क्रैम करना है। उसके अलावा जो पॉइंट्स होते हैं वो इसमें हो या किसी में भी हो, जहाँ पे 6-7 पॉइंट लिखे हैं वहां पे आप लोगों ने कोई से मैक्सिमम है कि 5 से 6 पॉइंट याद कर लेने हैं, ठीक है। उससे ज्यादा फर्दर आपने पॉइंट्स नहीं याद करने क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो उनको नहीं देखना। और बाकी जो इस तरीके से कोई छोटा चैप्टर होता है उसमें कुछ बहुत थोड़ी सी बातें होती है जिसमें आपके लिए कुछ डिफाइंस आ जाती है, उसके आगे उसकी कुछ टाइप्स आ जाती है। इसको आप लोगों ने देख लेना है। अदरवाइज आपने इसको सिर्फ एक दफा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि आप इसके बाद एमसीक्यू जब सॉल्व करें तो वो आपके सही से सॉल्व हो रहे हो। उसके बाद सिर्फ आपकी प्रैक्टिस बचती है, ठीक है। तो आई होप सो कि बहुत जल्द ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर थोड़ा तबीयत का मसला ना होता तो ये अब तक कंप्लीट हो चुका होगा होता सारा सिलेबस। लेकिन असल में सिलेबस लगता थोड़ा है लेकिन होता फिर भी थोड़ा ज्यादा है, इस वजह से नहीं हो सका कंप्लीट। तो बाकी मैं ये कह रही थी कि हम लोग एमसीक्यूज की तैयारी भी जरूर करेंगे, उसकी भी इंशाल्लाह वीडियो बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की तरफ। द मेन फीचर ऑफ द डिजाइन प्रोसेस ऑफ डेटाबेस इज द क्रिएशन ऑफ द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसका मेन जो फीचर है वो क्या होता है, डिजाइन प्रोसेस ऑफ डेटाबेस और उसकी क्रिएशन। Entity relationship diagram is a geographical representation of different entities, people, objects, concepts in a database and how they relate to each other. और यहाँ पे बड़ी इसकी हमें इसकी 3 टाइप्स दी गई है, one to many and many to many. One-to-one relationship exists when each record of one table is related to only one record of the other table. One-to-many relationships exist when each record of one table can be related to more than one record of the other table. Many-to-many exist when each record of the first table can relate to more than one record of the other table. So इन definitions में कोई मसला तो नहीं किसी को, और जितनी easy है होना भी नहीं चाहिए। जस्ट वन टू टू वर्ड्स जो है इसके चेंज हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इसके कुछ डायग्राम्स दिखेंगे, उससे भी बताया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं एंटिटी एंड ऑब्जेक्ट, thing, person, or unit about which you want to store information. Entity key, a property of an entity that are used to determine its identity. Relationships shows how two entities are linked in a database. Attributes, characteristics of the entity. Entity life history is used to describe what happens to an entity over time. उसके बाद ये हमारे पास जरा इम्पोर्टेंट है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्डाइज्ड programming language for storing, organizing, and retrieving data in a relational database. For हमें इसकी 5 टाइप्स दी गई है। Data definition language (DDL). DDL is used to define the database structure. It wouldn't change the data inside the database. 4 commands of DDL: create, alter, drop, template. Done it. Create to create a new table in a database, alter to alter the structure of the existing database, drop to delete an object from database, truncate to remove all records from a table. After that, the second one is data manipulation language, DML. DML is used to modify the database. मैनिपुलेशन का मीनिंग होता है कि हम लोग किसी चीज में तब्दीली ला रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर रहे हैं,
ठीक है, उसको ये नहीं कि हम उसको खत्म कर रहे हैं, हम उसी में ही कोई तब्दीली ला रहे हैं. So DML is used to modify the database. It is responsible for all form of changes in the database. Three commands of DML: insert, update, delete. Insert to insert new rows or records of data into a table. Update to update existing data within a table. Delete to remove one or more rows of a table. इसके अंदर डाटा को डिलीट नहीं करते. ये बात अगर आप लोग कहें कि यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन कहा हुआ है, तो ये उसकी कमांड है. उसमें हम लोग वो जो डाटा है उसको डिलीट ही कर रहे हैं, हम लोग जस्ट उसमें थोड़ी चेंजिंग लाने के लिए उसकी वजह से कुछ चीज जो है उसको रिमूव कर रहे हैं. उसके अलावा थर्ड पॉइंट है हमारे पास डाटा कंट्रोल लैंग्वेज. DCL. DCL is used to give and take rights and permissions of database user. For example, अक्सर आप लोगों ने अपने जो कंप्यूटर है उसके अंदर नोटिस किया होगा कि हमारे पास जो फोल्डर होता है उसकी एक्सेस भी हम दूसरे लोगों तक शेयर कर सकते हैं. उसके अंदर ये ऑप्शन होता है कि आप लोगों ने किसको शेयर करना है. और इसके अलावा मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपके पास गूगल ड्राइव की भी है, उसके अंदर भी ये परमिशन हमसे पूछी जाती है कि हम लोग उसमें भी पब्लिकली उसको कर सकते हैं. और बहुत कॉमन है ये, आप लोग भी वहां से ही नोट्स देते हैं. ठीक है. उसके बाद इसकी जो कमांड्स हमारे पास आ जाती है जिसमें हम ग्रांट और रिवोक आती है. ग्रांट टू गिव यूजर एक्सेस प्रिविलेजेस टू अ डेटाबेस. Revoke to take back permissions from the user. Data query language, DQL. DQL is only to retrieve data from the database. It uses only one command: select to retrieve data from the database. उसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन कंट्रोल आ जाता है. ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, TSL. TSL deals with the issues and matters related to transactions in the database. It has four commands: commit, rollback, save point, set transaction. Commit to save all transactions to the database. Rollback to undo a transaction in the case of any error occurs. Save point to set a save point within a transaction. Set transaction to specify the characteristics of transaction. इसमें आपने ये भी याद रखना है कि किस चीज की कितनी कमांड्स है, कितनी टाइप्स है, उन टाइप्स में कौन सी टाइप डिफाइन तो ऑब्वियसली आप लोग याद करेंगे, लेकिन हर डिफाइन में हर टाइप की कितनी कमांड है ये भी याद करें, और वो कौन कौन सी है ये भी याद होना चाहिए. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है. ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्रिप्टिव के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और ये एमसीक्यूज के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है. उसके बाद जी डाटा वेयर, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा डेटा वेयर हाउस. वेयर हाउस बेसिकली हम सिर्फ वेयर हाउस की बात करते हैं, तो इसको आसान उर्दू लैंग्वेज में ना वेयर हाउस को हम लोग गोदाम कहते हैं. ठीक है. अब जब डाटा वेयर हाउस है मीन्स कि डाटा बहुत बहुत सारा डाटा एक जगह पे स्टोर हो रहा है, तो उसको हम लोगों ने बोल दिया डाटा वेयर हाउस. डाटा वेयर हाउस इज द लार्ज स्टोरेज सिस्टम फॉर डाटा that can be analyzed for decision making. Data warehousing. Data warehousing is the process of collecting, organizing, and managing large amount of data which collected from various sources into one comprehensive database. डेटा वेयरहाउस में हम लोग डाटा एक जगह पे स्टोर कर रहे हैं, और वो जो प्रोसेस है उस सारे को हम लोग डाटा वेयर हाउसिंग का नाम देते हैं. उसके बाद हमारे पास इसके कुछ फंक्शंस आ जाते हैं जिसमें डाटा एक्सट्रैक्शन, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग, रिफ्रेशिंग आ जाता है. डाटा extraction involves gathering data from multiple sources. Cleaning, data cleaning में आ जाता है, involves finding and correcting the errors in the data. Data transformation may involves converting the data from legacy format to warehouse format. Data loading involves storing, summarizing, consolidating, and checking the integrity of data. Data refreshing may involves updating data. ठीक है. अब उसके बाद हम लोग चलते हैं नॉर्मलाइजेशन में. Normalization is the process of organizing data in a database. This technique meets three basic requirements: reduce data redundancy, data dependency, keeps logical, all related data items are stored together, eliminates undesirable characteristics like insertion, update, and
डिलीशन एनॉमली। अब एनॉमलीज क्या होती है उसको देख लेंगे। एन एनॉमली इज अ फ्लॉ इन databases which occurs because of poor maintenance and poor storing of data in the fault database। एनॉमली बेसिकली एक फ्लॉ होती है, एक खराबी आ जाती है हमारे डेटाबेस में। और वो क्यों आती है कि उन लोगों ने उसकी प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस नहीं की होती, और ना ही हम लोगों ने उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर किया हुआ होता है। तो उसके अंदर जो चीज जो खराबी आती है उसको हम लोग एनॉमली का नाम देते हैं। और नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि एलिमिनेट अनडिजायरेबल characteristics like insertion, update and deletion of anomalies। ठीक है, और यही चीज जो है ये हमारे पास एनॉमलीज की हमारे पास थ्री टाइप्स भी आ जाती है, जिसमें इंसर्शन, अपडेट और डिलीशन आ। Insertion occurs when data can't be inserted into a database due to the other missing data. Update occurs when data is only partially updated in a database। ठीक है, और deletion में occurs when data is unintentionally lost due to the deletion of other data। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कुछ और डिलीट कर रहे हैं तो हमें पता लगता है कि हम लोगों ने कुछ गलत चीज डिलीट कर दी। पर इसकी वजह से मतलब अक्सर मेरे साथ आते तौर पे ऐसा होता है कि मैंने एक फोल्डर डिलीट किया और सोचा कि ना मेरे पास ये टू टू टाइम्स पड़ा हुआ है तो मैं इसको इस जगह से डिलीट करती हूँ, और जब मैं वहां से डिलीट करती हूँ पता लगता है कि वो उसका इफेक्ट कहीं और भी हुआ है और वहां से भी वो चीज डिलीट हो गई। और अपडेट भी ऐसा होता है कभी कभी कि हम लोग क्या करते हैं कि अपडेट चल रही होती है और हम लोग उसको अनइंटेंशनली वहां पे स्टॉप कर देते हैं, या वो किसी भी वजह से वो पूरी तरीके से अपडेट नहीं होता, तो वो जो पार्शली अपडेट होता है वो भी अनॉमली में आ जाता है। जो इस तरीके से गलती से चीजें डिलीट हो जाती है वो भी अनॉमली में आ जाती है। और उसके बाद जी इंसर्शन में था हमारे पास डेटा कार्ड भी इंसर्टेड इनटू अ डेटाबेस ड्यू टू द मिसिंग डेटा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास अगर हम लोग कुछ टाइपिंग कर रहे होते हैं कोई चीज, हम लोग कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर या कोई फॉर्म हम लोग फिल कर रहे होते हैं, तो उसमें भी ऐसा होता है कि अगर जब तक हम लोग अपना प्रीवियसली हम लोग अपना डाटा इंसर्ट नहीं करते हमें नेक्स्ट ऑप्शन नहीं मिलती है, तो ये हमारे पास इंसर्शन एंड ऑल भी आ जाती है। तो इसी के साथ साथ जो है हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद इसकी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास दी गई है जिसमें एनालिटिकल डेटाबेस, बिजनेस एनालिटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स। उसमें उसके बाद बिजनेस इंटेलिजेंस और बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा मार्ट, डेटा एलिमेंट, database administrators, information master file, software inventory management, tape library, transaction file। और ये सारी आ जाती है, ये सब डिफाइन है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जो कि इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।